Okay, students, now starting with the last exercise of this chapter, that is exercise 1.4. The first question, they have asked you to find the ratio of the areas of two similar triangles, and they have given you the ratio of the corresponding side. So let A1 and A2 be the areas of the two triangles and S1 and S2 be the respective sides. ओके दोनों ट्राइंगल का एरिया क्या है A1 और A2 और उनके जो रिस्पेक्टिव साइड्स हैं करस्पॉन्डिंग साइड्स है S1 है और दूसरे वाले का S2 है. So by theorem of areas of similar triangles, I will write A1 upon A2 is equal to S1 square upon S2 square. That is A1 upon A2 is equal to, I can write S1 upon S2 whole square. And S1 upon S2 is given as 3 upon 5. So that is 3 upon 5 whole square. ये जो मैंने बॉक्स बनाया है जरा बीच में डाल देना इसको. ओके मीन्स A1 upon A2 is equal to S1 square upon S2 square. After that you write this box and then write this. So the answer is 9 upon 25. Same way solve the second question on your own. Any doubt ask me. Now third question, they have given you area of triangle ABC and area of triangle PQR is 80 upon 125 and you have to find, it is an activity to fill up the boxes. You have to find AB upon PQ, and ABC and PQR are similar triangles. So if they are similar triangles, it means that 80 upon 125 is AB square upon PQ square. So AB upon PQ will be root of 80 upon root of 125. Now 80 can be written as 16 into 5. 16 is a perfect square, बाहर निकाला तो 4 बन गया, तो ये 4 root 5. 125 can be written as 25 into 5. 25 is a perfect square, बाहर निकालेंगे तो 5 बन जाएगा. 5 root 5. root 5 कट हो गया, you get 4 upon 5. Now the fourth sum. They have given you 9 into area of triangle PQR is equal to 16 into area of triangle LMN, and if QR is 20, find MN. Okay, चलो फिर से स्टेटमेंट लिखते हैं. 9 into area of triangle PQR is equal to 16 into area of triangle LMN given. That means अभी क्रॉस ले लेंगे नीचे. So area of triangle PQR upon area of triangle LMN हो जाएगा और 16 upon 9 हो जाएगा, right? By sending 9 to RHS and taking area of triangle LMN to LHS, you get this is equal to 16 upon 9. But these two triangles are similar. Okay, उन्होंने QR दिया हुआ है तो QR के साथ corresponding side क्या बनेगा? MN बनेगा. So this is nothing but QR square upon MN square. So you get QR square upon MN square is equal to 16 upon 9. Taking square root of both the sides, you get QR upon MN is equal to 4 upon 3. So MN will be what? MN will be QR 4 upon 3 multiplied by QR. What will be MN? MN will be 4 upon 3 multiplied by QR. Solve करो अभी तुम लोग खुद से यहाँ पे. Okay, that is MN into 4 is equal to QR into 3. So MN क्या हो जाएगा? QR कितना है? 20. So 20 into 3 upon 4. 4 ones and 4 5s. So that is equal to 5 3s 15 units. Okay. Now coming to the next sum, that is the fifth question. Again they have given there are two triangles, एक बड़ा है और एक छोटा है. यहाँ पे bigger and smaller आ गया है. So they have given you the ratio of the areas of the two triangle and they are asking you to find the side of the larger triangle. Side of the smaller triangle is given. क्या दिया है? दो ट्राइंगल्स बोले हैं उन्होंने विच आर सिमिलर. वन ट्राइंगल इज बिग, वन ट्राइंगल इज स्मॉल. दे हैव गिवन यू द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ बोथ द ट्राइंगल्स एंड दे हैव गिवन यू द साइड. द स्मॉलर वाला जो साइड है उसका मेजरमेंट दिया है 12. नाउ लेट A1 एंड A2 बी द एरियाज ऑफ द टू ट्राइंगल्स. बिगर एंड स्मॉलर मैंने लिखा है तो A1 बिगर का हो गया, A2 स्मॉलर का हो गया. सिमिलरली S1 बिगर का साइड हो गया, S2 विल बी द स्मॉलर साइड. So you get A1 upon A2 is equal to S1 square upon S2 square by theorem on areas of similar triangles. Now this is given as A1 upon A2 क्या दिया? 225 upon 81.
अभी नेचुरली A1 बड़ा हो गया ना, क्योंकि उसका एरिया देखो बड़ा है, तो S1 स्क्वायर अपॉन S2 स्क्वायर, S2 इज द स्मॉलर, दिस वन स्मॉलर का साइड दिया 12, तो 12 स्क्वायर. अब S1 स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इट विल बी 225 इंटू 12 स्क्वायर, दैट इज 144 अपॉन 81. अब हम क्या करेंगे, यहीं पे मल्टीप्लाई मत करो, बहुत बड़ा हो जाएगा. और यू ध्यान से देखोगे तो 81, 144, 225 सब परफेक्ट स्क्वायर्स हैं. इसके लिए S1 इज इक्वल टू टेकिंग स्क्वायर रूट, S1 इज इक्वल टू 225 का स्क्वायर रूट 15, 144 का 12 और 81 का 9. ये कर हम लोग 9 कर दिए, उसके बाद कट करके यू गेट 20. सो द साइड ऑफ द बिगर ट्रायंगल इज 20. Now the next sum, that is a sixth sum. They have given you that triangle ABC and triangle DEF are equilateral triangles. अभी equilateral triangles हैं, इसका मतलब क्या हो गया, all the angles are 60 degrees. Okay, मीन्स all angles same, तो A टेस्ट से वो हो गए similar triangles, and plus they have given you triangle of ABC upon area of triangle DEF is 1/2. So area of triangle ABC upon area of triangle DEF will be AB square upon DE square is equal to 4 square upon DE square. But ये area of the ratio is half. So half is equal to 16 upon DE square. Cross multiply करो. So you get DE square is equal to 16 upon 2. So DE square is 32. So D will be root of 32. That is root of 16 into 2. 16 is perfect square. बाहर निकालोगे तो 4 बन जाएगा. That is 4 root 2. Only here you have just add 1 because इन्होंने similar दिया नहीं, equilateral triangles दिया है, तो you can write down simply triangle ABC similar to triangle DEF by AAA test. ब्रैकेट में लिख दो each angle 60 degrees. Okay, that's it.